हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। कपिल उवाच अथ जगृहमेधीयान् धर्मानेवावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान्द्वग्धीभूय पिपर्तितान् स चापि भगवद्धर्मात् काममूढः परं मुखः जजते क्रतुभिर्देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान्वित तच्छ्रद्धया क्रान्तिमते पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चन्द्रमसं लोकं सोमपा पुनरिष्यति यदा चाहीन्द्र सज्जायां शेतेन्नन्तासना हरिः तदा लोकलयं यन्ति त एते गृहमेधिनं ये स्वधर्मान् न दुह्यन्ति धीरा कामर्थहेतव निसङ्गान्यस्तकर्माण प्रसन्ता शुद्धचेतसा निवृत्ति धर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृता स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा सूर्यद्वारेण तेजन्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरे सम्प्रकृति मस्येत्पत्यन्तभावनं द्विपरार्धावसाने च प्रलयो ब्रह्मणस्तुजे तावदध्यासते लोकं परस्य परचिन्तका क्ष्माम्भो नलानील वियन्मन इन्द्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्जिहीर्षो अव्याकृतं विशति चरिः गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभू एवं परित्य भगवन्तमनु प्रविष्टा जे योगिना जितमनु हृन्मनसो विरागा तेनैव साकममृत पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रदानमुपजन्त्यगताभिमाना अथ तं सर्वभूतानां हृत्पद्मे सुकृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनि अद्य स्थिरचराणं जो वेदगर्भः सहर्षिभिः योगेश्वरै कुमाराद्यै सिद्धै योगप्रवर्तकै भेददृष्ट्याभिमानेन निसङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं स संस्तृत्य पुनः कालेनेश्वरमूर्तिना काले जाते गुणव्यतिकरे तथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च तेऽपि धर्मविनिर्मितं निषेध्य पुनरायन्ते गुणव्यतिकरे सति जे त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विता कुर्वन्त्य प्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नसः रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानुजितेन्द्रिया पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहे स्वभिरताशया त्रैवर्गिकास्ते पुरुषाभिमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोरो विक्रमस्य मधुद्विषा नूनं दैवेन विहता जे चाच्युतकथा सुधं हित्वा शृण्वन्त सद्गाथा पुरीशमिव षड्भुज दक्षिणेन पथां जम्ना पितृलोक व्रजन्ति ये प्रजामनो प्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृते ततश्चैक्षिण सुकृता पुनर्लोकमिमं सते पतन्ति विवसादेवै सद्य बिभ्रंसितोदया तस्मात् सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनं तद्गुणाश्रयया भक्ता भजनीयपदाम्बुजं वासुदेवे भगवती भक्तियोगप्रज्वलिता जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनं ददश्च चित्तमर्थेषु समेष्वेन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियमप्रियमित्युत स तदैवात्मनात्मान निसङ्गसमदर्शनं हेयपादेरहितमारूढं पदमीक्षते ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृश्यादिभिः पृथग्भावैर्भगवानेक ईयते एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिना युज्यते भिमतो ह्यर्थो जदसङ्गसुकृत्स्नसा ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्मनिर्गुणम् अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मणा यथा महानहं रूप स्त्रीवृत्पञ्चविधस्वरा एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगज्जत एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निसङ्गो विरक्त्या परिपश्यते इत्येतत्कथितं गुरुभिः ज्ञानं तद्ब्रह्मदर्शनं येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्या भक्तिलक्षणा द्वयोरप्येक एवार्थः भगवत्शब्दलक्षणा यथेन्द्रियै पृथग्द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रय एको नानेयते तद्वद् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः क्रियया क्रतुभिर्दानैस्तपः स्वाध्याय मर्शनै आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणां योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मणो भयचिह्नेन ज प्रभृतिनिवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च
यते भगवाने भी सगुण निर्गुण स्वदृक् प्रवाचं भक्ति योगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य च व्यक्तिगतेर्जोऽन्तर्धावति जन्तुषु जीवस्य संस्कृति बर्हि रविद्या कर्म निर्मिता जास्वंग प्रविशन्नात्मा न वेदगतिमात्मना नैतत्खलायो पदिसेन्ना विनीयताय बहिर्चित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च नो लोलुपाय पदिसेन्न गुहारूढ़ चेतसे ना भक्ताय च मे जातु न मद्भक्त द्विषामपि श्रद्धधानाय भक्ताय विनिताय न सूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जात विरागाय सन्तचित्ताय दीयताम् निर्मत्सराय शुचये जस्याहं प्रेयसं प्रिया जो इदं शृणुयातं व श्रद्धया पुरुषः सकृत् जो वाभिधात्ते मच्चित्त सह्येति पदवीं च मे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे कापिलेये 32 अध्याय अथ 33 अध्याय मैत्रेय उवाच श्री 32 अध्याय कृष्णार्पणमस्तु 33 अध्याय मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनेत्रे साकर्दमस्य दयिता किल देवहूते विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषयाङ्कित सिद्धिभूमिं देवहूतिरुवाच अथप्यजन्त सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदेशबीजं दध्यौ स्वयं जज्ज ठराब्जजात स एव विश्वस्य भवन् विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्य सर्गाद्यनीह वितथाभिसन्धि रत्नेश्वर तर्क्य सहस्रशक्ति सत्वं भृतो मे जठरेण नाथ कथं नु जस्योदर एतदासीत् विश्वं जुगन्ते वटपत्र एक स्मेते स्म माया शिशुरङ्घ्रिपान त्वं देहतन्त्र प्रसमाय पाप्मना निदेशभाजं च विभो विभूतये यथावतारस्तपसूकरादय तथायमप्यात्मपलो पथोपलब्धये जन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् जत्प्रौहणात् जत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात् अहो बत स्वपचोतो गरीयन् जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुगु शश्नुराज्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति जेते तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांशं प्रत्यक्श्रोत्रस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं मैत्रेय उवाच ईडितो भगवानेव कपिलक्ष्य परपुमान् वाचा विक्लवयत्याह मातरं मातृवत्सल कपिलो उवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्तितेन परं कष्ट मचिरा दवरोत्स्यसि श्रद्धत्स्वैतन्मतं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन मावभयं माया मृत्युमुच्यन्त्य तद्विदा मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान् सतीं चत्तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो नुमतो जजौ सा चापि तनयोक्तेन योगदेशेन जोगजु तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहिता अभीक्षणा बगाहकपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं चक्र तपसा बिभ्रतिं चेरणीं कृशं प्रजापते कर्दमस्य तपजोग विजृम्भितं स्वग्राहस्थ्य मनोपम्य प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि पयफेन निवासं सज्जा दन्तारुक्मपरिच्छदा आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च शुद्धस्फटिकक्वकुडेस्यो महामारकतेषु च रत्नप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुता गुह्योद्यानं कुसुमितैरम्यं बाहोमरद्रुमै कुजद्विहङ्गमिथुनं गायन्मत्तमधुव्रतं यत्र प्रविष्टमात्मानं विविधानुचरा जगु वाप्यामुत्पलनिगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितं हित्वा तदप्सित तमप्याखण्डलजोषितं किञ्चिच्चकार वदनं पुत्रविश्लेषणातुरा वनं प्रव्रजिते पत्या बपत्या विरहातुरा ज्ञाततत्त्वाप्यभुन्नष्टे वत्से गौरी वत्सला तमेव ध्यायति देव मपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचरितो वत्स निस्पृहा तादृशे गृहे ध्यायति भगवद्रूपं
जदाहध्यानगोचरं सुता प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना विशुद्धेन तदात्मात्मना विश्वतोमुखं स्वानुभूत्या तिरोभूत मायागुणविशेषणं ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवत्यात्मसंशये निवृत्तजीवपत्तित्वात् क्षीणक्लेशाप्तनिवृत्ति नित्यारूढसमाधित्वात् पराभूतगुणभ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दुष्टमिवस्थितः तदेह परतोपोष व्यकृशश्चाध्यसम्भवात् बलौ मलैरवच्छन्न सधुम इव पावक स्वाङ्गं तपमयं मुक्त केशं गताम्बरं दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधि एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरत परम् आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं भगवन्तमवापः तद्विरासित पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं तत्र सा सिद्धि संसिद्धिमुपेयुषे तस्यास्तज्जोगविधूतमर्त्यं मर्त्यमभूत्सरेत् स्रोतस्या प्रवरा सौम्या सिद्धिदा सिद्धसेविता कपिलोऽपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मातरं समनुग्राप्य प्रागोदीचिं दिशं जजौ सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरगणैः स्तूयमान समुद्रेण दत्तार्हणनिकेतन आस्ते योगं समस्ताय सांख्यं चर्यैरभिष्टुतः त्रयाणमपि लोकानामुपसन्त्यै समाहितः एतन्निगदितं तात जत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावन जयदमनुशृण्वति जोभिधत्ते कपिलमुनेर्मतमात्मजोगगुह्यं भगवति कृतधि सुपर्णकेता बुपलभते भगवत्पदारविन्दम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यामष्टदशसाहस्र्यं परमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलयोपाख्याने 33 इति तृतीयस्कन्धः समाप्तः। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ चतुर्थस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायन्त्रिश्च कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता आकुतिं रुचये प्रादादपि भ्रातुमतिं नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापति स भगवान् रुचिस्त्या मजीजन मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना जस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुजज्ञः स्वरूपदृक् जास्त्री सा दक्षिणाभूतेरंशभूतानपायनि आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं विता तरोचिसं स्वयंभुव मुदायुक्त रुचिर्जग्राह दक्षिणं तां कामयानं भगवानुवाह जजुसम्पतिं तुष्टाय तोषमापन्न जनयद्वादशात्मजं तोष प्रतोष सन्तासो भद्र सन्तिरिडस्पति इद्म कविर्विभूष्वरुह्न सुदेव रोचनद्विष तुषिता नाम ते देवा आसन स्वायभुवन्तरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुर गणेश्वर प्रियव्रत उत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्र पौत्र नतृप्तानामनुवृत्तं तदन्तरं देवहूतिमदत्तात कर्दमायात्मजं मनु तत्सम्बन्धिं सुतप्रायं भवता गदत मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं ब्रह्म भगवान् मनु प्राजज्जात्कृतः सर्गस्त्रैलोक्या विततो महन् जाकर्दमसुता प्रोक्ता नवब्रह्मर्षिपत्न्यो तासां प्रसूति प्रसवं प्रच्यमानं निबोध मे पत्नी मरे चेस्तु कला सुशुभे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च जयोरापुरितं जगत् पूर्णिमा सुतविरजं विश्वगं च परन्तप देवकुल्यं हरे पाद शौचाज्जाभूत् सरिद्दिव अत्रे पत्न्यनसूया त्रिञ्जज्ञे सुजसा सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोममात्मे स ब्रह्मसम्भवान् विद्रोवाच अत्रे गृहे सुरश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्यन्त हेतव किञ्चिर्चिकीर्षवो जाता एतादख्या हि मे गुरो मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा नोदितः सृष्टा भर्तृब्रह्म विदाम्बर सह पत्न्या जया वृक्षं कुलाद्रितपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाशो शोककानने बाभिः श्रद्भिरुद्घृष्टे निर्बन्ध्याया समन्तत प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनि अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्व निलभोजन शरणं तं प्रपद्येऽहं ज एव जगदीश्वर प्रजामात्मा समं मह्यं प्रजच्छत्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामे मेधसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मुग्ध सामि समीक्ष्य प्रभव स्त्रिय अप्सर मुनिगन्धर्व सिद्धविद्याधरो रगै बीतायमान जसस
तदाश्रमपदं जजु तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतीतमना मुनि उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुधर्षभान् प्रणम्य दण्डवत् भूमा उपतस्थेर्हणञ्जलि वृषहंस सुपर्णास्वे स्वैश्चिह्नैश्च चिह्नितन् कृपावलोकनेन हसद्वदनेनोपलम्बितन् तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणे चेतसत्प्रवणं जुञ्जान् स्थावतीत् संहिताञ्जलि सुलक्ष्मया सुप्तया वाचा सर्वलोकगर्यस अत्रिरुवाच विश्वद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर्माया गुणेननुजुगं विगृहीता देहा ते ब्रह्म विष्णुगिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं स्तेभ्यः कहेव भवतां मह्योपहूत एको मय्यैह भगवान् विबुधप्रधानैश्चित्तीकृता प्रजननाय कथं नु जूयम् अत्रागतास्तनुभूतं मनसोऽपि दूरा वृता प्रसीदत महानिह विस्मयो मे मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभा प्रत्याहुश्लक्ष्मया वाचा प्रहर्ष्य तं ऋषिं प्रभो देवाऊचो यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम् अथास्मदं सभूतास्ते आत्मजा लोकविस्मृता भवितारुङ्गभद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते जस एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मु सुरेश्वरा स्वभाजितास्तयो सम्यक् दम्पत्योर्मिषतोस्तथा सोमभूद्ब्रह्मणो शेन बत्तविष्णुस्तुजो गवीत् दुर्वासा शङ्करस्यांश निबोधाङ्गिरस प्रजा श्रद्धा त्वङ्गिरसः पत्नी चतस्रो सूतकन्यका सिनिबाली कुहुराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा तत्पुत्रा वपरावास्तं ख्यातौ स्वारोचिषन्तरे उतत्य भगवान् सख्यात् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पति कुलस्त्य जनयात् पत्न्यामगस्त्यं च हविर्भुवि स्वन्यजन्मनि दहाग्नि ऋभ्विश्रवश्च महातपा तस्य जक्षपतिर्देव कुबेरस्पीडा बिडासुत रावण कुम्भकर्णश्च तथा न्यास्यं विभीषण कुलहस्य गतिर्वर्ज्या त्रिंसूत सतीसुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयसां सहिष्णुं च महामते क्रतोरपि क्रियाभर्ज्या बालखिल्यानसूयत ऋषीन् षष्टिसहस्राणि ज्वलत ब्रह्मतेजसा ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतु प्रधानस्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मला चित्रकेतु सुरच्चिश्च विरजामत्र एव च कुलवणो वसुभृजान द्युमान् सत्यादयो परे चित्तिस्त्वथर्वण पत्ने लेभे पुत्रं धृतव्रतं दध्यञ्जमस्वशिरसं भृगुर्वंशं निबोध मे भृगुख्याता महाभाग पत्न्या पुत्रा न जीजन दातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्परम् आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डप्राण एव च मार्कण्डय मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनि कविश्च भार्गवोजस्य भगवानुसनासुत त एतमुनयक्षत्त लोकान् सारैरभावयन् एष कर्म एष कर्ता मदौहित्र सन्तान कथितस्तव शृण्वत श्रद्धदानस्य सद्य पापहर पर प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपजेमे ह्यजत्वजा तस्यां ससर्ज दुहितृ षोडशा मललोचना त्रयोदशा दार्धमाय तथैकामग्नये विभो पितृभ्य एकं युक्तेभ्य भवायैकं भवच्छिदे श्रद्धा मैत्री दया शान्ति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा हि मूर्ति धर्मस्य पत्नय श्रद्धा सुता शुभं मैत्री प्रसादम भयं दया शान्ति सुखं मुदं तुष्टि स्मयं पुष्टिरसूयता योगं क्रियोन्नति दर्पमर्थं बुद्धिरसूयता मेधा स्मृति तितिक्षा तु क्षेम हि प्रश्रयं सुतं मूर्ति सर्वगुणोत्पत्ति नरनारायणभृशे जयोर्जन्मन्यतो विश्वमभ्यानन्दत् सुनिर्वृतं मनांसि ककुभो वाता प्रसेदु सरितद्रया दिव्यवाद्यं चतुर्जानि पेतुः कुसुमवृष्टय मुनय तुष्टुबुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नरा नृत्यति स्म स्त्रियो दिव्य आसीत् परममङ्गलं देवा ब्रह्मादयो सर्वे उपत स्थूरभीष्टवै देवा ऊचुः जो मायया विरचितं निजयात्मनीदं खेरूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै
स्वयं स्थिति व्यतिकरोपसमाय सृष्टन् सत्त्वेन सुरगणा ननुमेय तत्त्व दृश्यादभ्रकरुणेन विलोकनेन जत्श्रीनिकेतममलं क्षपितारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात भगवन्तापविष्टुतौ लब्धावलोकैर्जजुतु रर्चितौ गन्धमादनं ताविमौ वै भगवतो हरेरंसा विहागतौ भारव्ययाय च भुव कृष्णौ जदुकुरुद्वहौ स्वाहाभिमानी नश्चग्ने रात्मजां स्त्रीनजीनन नजीजन पावकं पावमानं च शुचिं च हुतभोजनं तेभ्यग्नय समभवन् चत्वारिंशच्च पञ्च च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहे वैतानिके कर्मणि जन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः अग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूपन्ते ज्ञयस्तु ते अग्निस्वत्ता बहिर्सदा सौम्या पितराज्यपा सग्नयो नग्नय स्तेषां पत्नी दक्षायणी स्वधा तेभ्य दधार कन्ये देवयूनं धरणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगे भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मन शत्रुसंपुत्र नरेभे गुणशीलता पितर्ज प्रतिरूपे स्वे भाव भवाया नागसेरुषा अप्रौढैवात्मनात्मान मजहा जोग संयुता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वितीयोऽध्याय अथ द्वितीयोऽध्याय विदुरोवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्ष दुहितृवत्सल विद्वेषमकरोत्कस्मादनादृत्या मुजं सतीं कस्तं चराचर गुरुं निर्वैरं सन्तविग्रहम् आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत् एतदख्याहि मे ब्रह्मन् जामातु श्वशुरस्य च विद्वेषस्तु जत प्राणं त्यजते दुस्त्यजन् सति मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजं सत्रे समेता परमर्शय तथा मरगणाः सर्वे सानुगामुनयज्ञय तत्र प्रविष्टमृगय दृष्ट्वार्कमिव रोचिषा भ्राजमानं वितिमरं कुर्वन्त तन्महत्सदा उदातिष्ठं सदस्यस्ते स्वधिष्णेभ्यः सहग्नय ऋते विरिञ्चं सर्वं च तद्भासा क्षिप्तचेतसा सदसस्पतिभिर्दक्ष्य भगवन् साधु सत्कृत अजं लोकगुरुं नत्वा निशसाद तदज्ञया प्राङ्निसन्नं मृडं दृष्ट्वा नाम्रुष्यत्तनद्रुत उवाच वामं चक्षुर्भ्यामभिभिक्ष्य दहन्निव श्रूयता ब्रह्मर्षयो मे सह देवः सहग्नय साधूनां ब्रुवतो वृत्तं न ज्ञानन्न च मत्सरात् अयं तु लोकपालानां जसोघ्नो निरपत्रप सद्भिराचरित पंथा जेन स्तब्धेन दूषित एष मे शिष्यतां प्राप्तो जन्मे दुहितुरग्रहीत पाणिं विप्राग्निमुखत सावित्र्या इव साधुवत् गृहीत्वा मृगसावाक्ष्या पाणिं मर्कटलोचना प्रत्युत्थानाभिवादर्हे वाचाप्यकृतनोचितं लुप्तक्रियाया शुचये मानिने भिन्नसे तवे अनिच्छनप्यदां बालं शूद्राये भोषतिं गिरं प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्भृता उन्मत्तवन्नग्न व्युक्तकेशो हसन्रुदन् चिताभस्मकृतस्नान प्रेतशृङ्नस्तिभूषण शिवापदेशो ह्यशिवो मत्तजनप्रिय पति प्रमथ भूतानं तमो मात्रात्मकात्मनं तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशौचाय दुर्हृदे दत्तावत्त मया सद्भि चोदिते परमेष्ठिना मैत्रेय उवाच विनिन्दैवं स गिरिश मप्रतिमपवस्थितं दक्षथापौपस्पृश्य क्रुद्ध सक्तुं प्रचक्रमे अयं तु देवयजन इन्द्रपेन्द्रादिभिर्भव सहभागं न लभतं देवैर्देवगणाधम निषिध्यमान सदस्य मुख्यै द्रक्ष्यगिरित्राय विसृज्य शापं तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्धमन्युर्जगाम कौरव्य निजं निकेतनं विज्ञाय शापं गिरिशानुग्राग्रणी नन्दीश्वर रोषकषाय दूषित दक्ष्याय शापं विससर्ज दारुणं जे चन्वमोदं सदवच्यतं द्विजा ज एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्या प्रतिद्रुहि दुह्यत्यज्ञ पृथग्दृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवत्
गृहेषु गृहधर्मे गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवाद विपन्नधि बुद्ध्या परा विद्यायिन्या विस्मृतात्मगति पशु स्त्रीकाम स्तस्त्व स्वस्त्वतितरां दक्षोपस्तमुखो चिरात् विद्या बुद्धिरविद्यायां कर्ममय्यामसौ जडा संसरन्त्विहजे चामो मनो सर्वापमानिनम् गिरिश्रुताया पुष्पिन्या मधुगन्धेन भूरिणा मग्ना चन्मथितात्मानं समूहन्तु हरद्विषा सर्वभक्षा द्विजावृत्ते धृतविद्या तपव्रता वित्तदेहेन्द्रिया रामा जाचका विचरन्त्विह तस्यैव ततः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु प्रसृज्य प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरन्त्ययं भवव्रतधरा ये च तन् समनुव्रता पाखण्डिनस्ते भवतु सच्छस्त्र परिपन्थिना नष्टशोचा मूढधियो जटाभस्मास्थिधारिणा विशन्तु शिवदीक्षाया यत्र दैवं सुरासवं ब्रह्मं च ब्रह्मणंश्चैव जज्जूय परिनिन्दिता सेतुं विथारणं पुंसामत पाखण्डमाश्रिता एष एव हि लोकानां शिवपन्था सनातन ज पूर्वे चानुसंसृज्य प्रमाणं जनार्दनं तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनं विगर्ह्य जातपाषण्डं दैवं वो यत्र भूतराट् मैत्रे उवाच तस्य वं वदतः शापं भृगो स भगवान् भव निश्चक्राम तत किञ्चित् विमना इव सानुगा तेऽपि विश्वसृजा सत्रं सहस्रपरिवत्सरान् संविधाय महेश्वास जत्रेज्य ऋषभो हरिः आप्लुत्यावभृतं यत्र गंगा जमुनयान्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम जजुस्तत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षशापनाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्याय मैत्रेय उवाच सदा विद्विषतरो त्वरेवं कालो वै ध्रियमाणयोः जामातु श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे यदाभिषिक्त दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्टिना प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयो भवत् इष्ट्वा सवाजपेयेन बह्नि ब्रह्मिष्ठानभिभूय च बृहस्पति शवं नाम समारेभे क्रतोत्तमं तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवता आसन् कृता स्वस्त्ययना तत्पत्न्यश्च सभर्तृका तद्दुपसृत्य नभसि खेचराणां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञमहोत्सवं व्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्यः उपदेव वरस्प्रिय विमानजाना सप्रेष्टा निष्ककण्ठे सुवासस दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलक्षीं मृष्टकुण्डला पतिं भूतपतिं देव मौस्तुक्यादभ्यभासत सत्योवाच प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्जापितो यज्ञमहोत्सवं किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति तस्मिन् भगिन्या मम भर्तृभिः स्वके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिदृक्षव अहं च तस्मिन् भवता विकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुं तत्र श्वशुरमे नन्नु भर्तुसंहिता मातृश्वश्रुक्लिन्नधियं च मातरं द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिः वृण्णीयमानं च मृडाध्वरध्वजं त्वयेतदाश्चर्यमयात्मजात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं जोषित तत्त्वविच्च मे च ते दीनादिदृक्ष्ये भव मे भवक्षितिं पश्य प्रयन्तिरभवान्यजोषित प्यलङ्कृता कान्तसखा वरुषथ जासंव्रजद्भिः क्षितिकण्ठमण्डितं नभो विमानैकलहंस पाण्डुभिः कथं सुताया पितृगेह कौतुकं निशम्य देह सुरवर्जनिङ्गते अनाहुता अपि अप्यभिजन्ति सौहृदं भर्तृ गुरर्देह कृतश्च केतनं तन्मे प्रसीदेदममर्त्यवाञ्छितं कर्तुं भवान् कारुणिकोऽवतारहति त्वयात्मनोर्धे हमदभ्रचक्षुषा निरूपिता मानुगृहाण जाचित ऋषिर्वाच एवं गिरित्र प्रिययाभिभाषित प्रत्यभ्यधत्त प्रहसं सुहृत्प्रिय संस्मारितो मर्मभिदकुबा गिषुन् जानाहो को विश्वसृजं समक्षत श्रीभगवानुवाच
त्वयदीतं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभिजन्ति बन्धुषु ते यद्यप्नुत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसात्म्य मदेन मन्युना विद्यातपो वित्तवपु वयकुले शतं गुणैः षड्भिरसत्तमे तरे स्मृतौ हतायं भृतमानदुदृश स्तब्धा न पश्यन्ति हिदाम भूयसं नैतादृशन् स्वजनव्यपेक्षया गृहन् प्रतीया धनवस्थितात्मनं जोभ्यागतन् बधि वक्रधीया विचक्षे आरोपितभ्रूभिरमर्षणाक्षिवे तथा रिभिर्न व्यथते शिलिमुख्यै शेते अर्दितांगो हृदयेन दूयता स्वानं यथा वक्रधियं दुरुक्तिभिः दीवार्निशं तप्यति मर्मताडित व्यक्तं तमुत्कृष्टगते प्रजापते प्रियात्मजानामसि शुभ्रसम्मता अथापि मानं न पितु प्रपत्स्यते शसे मदाश्रयात् क परितप्यते जत पापच्यमानेन हृता तुरेन्द्रिय समृद्धिभिः पुरुषबुद्धिसाक्षिणम् अकल्प एषा मधिरोढुमञ्जसा पदं परं द्वेष्टि यथा सुराहरिं प्रत्युग्गम प्रस्रवश्रयणाभिवादनं विधीयते साधुमिता सुमध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायै वनदेहमानिने सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव सद्दितं जदीयते तत्र पुमानपावृत सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेव ह्यध्यक्षजो मे नमसा विधीयते तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृत् दक्षो मम द्वित्वदनुव्रताजे व्रतश्चजे जो विश्वशृङ्गजगतं वरोरुमा मनागसं दुर्वचसा करोचित्तर तरिः तिरः यदि व्रजिष्यत्यतिहासमद्वच भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् परो भव यदा स सद्य मरणाय कल्पते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे उमारुद्र संवादे तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा वीररामशङ्कर पत्न्यङ्गनाश इव यत्र चिन्तयन् सुहृद्दिदृक्षो परिशङ्किता भवा निष्क्रामते निर्विशते द्विधा सा सुहृद्दिदृक्ष्या प्रतिघात दुर्मना स्नेहातृदत्य श्रुकलातिविह्वला भवं भवन्य प्रतिपूरुषं रुषा प्रतध्य प्रत्यक्ष तीवैक्षतजातवेपथो तथा विनिश्वस्य सती विहायतं शोकेन रोषेण च दूयतां हृदा पित्रोरगात्स्वेण विमूढधिगृहन् प्रेम्णात्मनो जर्जो धर्म मदात् सतां प्रिय तामन्वगच्छन् दूतविक्रमं सते मेकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रश सपार्षदाजख्या मणिन्मय मदादय पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथा तां सारिका कन्दुकदर्पणाम्बुज श्वेतातपत्रव्यजनस्रगादिभिः गीतायनैर्दुन्दुभिशङ्खवेणुभिः वृषेन्द्रमारोप्य विटङ्किता जजु आब्रह्मगोसर्जितसज्ञा स वैशसं विप्रर्षि जुष्टं विबुधैश्च सर्वश मृद्दावय काञ्चनदर्भचर्मभिः निःसृष्टभाण्डं यजनं समाविशत् तामागतं तत्र न कश्चनाद्रियात् विमानितं यज्ञकृतो भयाज्जन ऋते स्वसुर्भे जननीं च सादरा प्रेमाश्रुकण्ठ्य परिस्वस्वदुर्मुदा सौन्दर्य संप्रश्न समर्थवार्तया मात्रा च मातृस्व श्रुभिश्च सादरं दत्ता सपर्जम्बरमासनं च सा नादत्त पित्रा प्रतिनन्दिता सती अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेळनं विभौ अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरे चुकोपलोकानिव दक्षतिरुषा जगरहसामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपथश्रमस्मयं स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थान् निगृह्य देवी जगतो विशृण्वत। श्रीदेव्योवाच नजस्य लोकेस्त्यतिसायन प्रिय तथा प्रिय देहभृतं प्रियात्मना तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरखे ऋते भवन्तं कथमप्रतीपयेत् दोषान् परेषां हि गुणेषु साधव गृह्णन्ति केचिन्न भवदृशद्विज गुणांश्च फल्गु
उन बहुलीकरिष्णव महत्तमस्ते स्वविदध्ववानघं नश्चर्यमेतत् सतसस्तु सर्वदा महद्विनिन्दा गुणपात्मवादिषु शीर्ष्यं महापुरुषपाद पांशुभे निरस्ततेजसु तदेव शोभनं जद्वक्षरं नाम गिरेरितं नृणं सकृत्प्रसंगा दघमासु हन्ति तत् पवित्रकीर्तिं तमलङ्घ्य शासनं भवानः द्वेष्टि शिवं शिवेतर जत्पादपद्मा महतां मनोलिभि निर्वेशितं ब्रह्मरसा सवार्थिवे लोकस्य जद्वर्षति चाशिषोऽर्थिना तस्मै भवान् द्युहते विश्वबन्धवे किं वा शिवाख्यमशिवं न विद्युस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटाश्मशाने तन्माल्य भस्मानुकपाल्य विश्वसत्पिशाचै जे मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टं कर्णौ पिधाय निरयात् जदकल्पहिषे धर्मावितर्ज्य शृणिनुभिरस्यमाने छिन्द्यात् प्रप्रहस्य प्रसह्य रुसते मसतिं प्रभुश्चे जिह्वामनुनपि ततो विसृजेत् सधर्म अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्येषिति कण्ठगर्हिणा जग्धस्य मोहाद्य विसुन्धिमन्धस जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्ष्यते न वेदवादाननुवर्तते मते स्व एव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्ययो पृथक् स्व एव धर्मेण परं क्षिपत् स्थितः कर्म प्रवृत्ता च निवृत्तमप्रुत्यं वेदे विविच्य भयलिङ्गमाश्रितं विरोधि तज्जोग पदैककर्तरि द्वयं यथा ब्रह्मणि कर्म नर्चते मावपदव्यदव्य पितरस्मदा स्थिता या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः तदन्न तृप्ते रसोभ्रुभिरीडिता अव्यक्तलिंगा अवधूत सेविता नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनाल मलं कुजन्मना व्रीडा ममाभूत कुजन प्रसंगता स्तज्जन्म दिग्जो महता मवद्यकृत् गोत्रं त्वदीयं भगवन् वृषध्वज दक्ष्यायणित्याह जदा सुदुर्मना व्यपेत नर्मस्मितमासु तद्यं व्युत्स्रक्ष्येतत् कुणपं त्वदङ्गजम् मैत्रेय उवाच इत्वद्भरे दक्ष्यमनुद्यत् शत्रुहन् हिताभिदीचिं निशशाद सन्तवाक् स्पृष्ट्वा जलं पितदुकुल संवृता निमील्य दृग्जोगपथं समाविशत् कृत्वा समानापनिलौजितासना स्वदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रत शनैर्हृदि स्थाप्य धीरोरसि स्थितं कण्ठाद्भ्रुवोन्मध्य मनिन्दितानयात् एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहुसमारोपितमङ्कमादरात् जिहासति दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रे स्वनीलाग्निधारणं तथा स्वभर्तुश्चरणम्बुजासवं जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरं ददर्श देहो हतकल्मषा सति सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जग्निना तत्पश्यतं खे भुवि चाद्भुतं महत् हा देहाहेति बाद सुमोहा न जायत हन्त प्रिया दैवतमस्य देवी जुहावसुन्केन सति प्रकोपिता ओहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतिर्जस्य चराचरं प्रजा जुहावसुञ्जद्विमतात्मजा सति मनस्विनी मानमभीक्ष्णमर्हति सोऽयं दुर्मर्षहृदयो ब्रह्मधृक् च लोके प्रकीर्तिं महतिमवाप्स्यति जदङ्गजं स्वां पुरुषद्विदुद्यतं न प्रत्यसेधन्मृतये पराधत वदत्यैव जनः सत्या दृष्ट्वा श्रुत्याद्गमद्भुतं दक्ष्यं तत्पार्षदा हन्तु मुदतिष्ठं नुदायुधा तेषामापततं वेगं निशम्य भगवान् भृगु जज्ञघ्नेन जजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः अध्वर्ज्यूणाहुयमाने देवा उत्पेतुरोजसा रुभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ता सहस्रश तैरलाता युधैर्सर्वे प्रमथा सहगुह्यका हन्यमाना दिशो भेजे पुरुषद्भिः ब्रह्म तेजसा
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे सतीदेहोत्सर्ग नाम चतुर्थोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओं तत्सत्। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। पुंजस्य स्मृता च नामुक्ता तपयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां जाति सद्य वन्दे तमच्युतं। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। विष्णुस्मरणात् सकलं परिपूर्णमस्तु। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।